Assalamu alaikum, good afternoon. We are back with the chase of Singpora Warriors. They need 151 to win this match and to lift to the Big Bash Cricket Tournament title for the first time. This is edition 1 and we are underway with the grand finale. Let's take a quick look up the field. On the offside we start with, there is wicketkeeper, then followed by first left. Third man back with a point, straightish point. There is short extra cover, there is mid off on the onside. There is short mid on in place. There is a backward skylag right on the boundary. There is short fine leg to be precise. The very first ball, Javed Iqbal will bowl the very first ball of the match. And off the chase here at the centre. Singpora Warriors will require 151 to win this match and to lift to the Big Bash T20 cricket tournament Kunzer for the first time. Zubair on strike and his colleague is at the non-strike, and the ball number 1 goes away from us and goes, that's in the air all the way down to the fine leg. 6 more. He starts off with a 6, all guns blazing down the leg side, pitched in short, way down the leg side, and batsman just pedals it all the way down to the boundary, just directed it down to the fine leg for 6, and they start off with a 6, all guns blazing short. 6 for none in over number 1. In my com box to the left of me I got Azam Sab, and it's time to welcome Azam in the com box. शुक्रिया मुनव्वर भाई. 151 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे सिंहपोरा वॉरियर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज और जुबैर, और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नंबर 2 जर्सी पहने हुए उनका नाम कुछ समय बाद हम आप तक पहुंचाएंगे. इमरान गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए. पहली गेंद शॉट, पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर थी. बल्लेबाज ने दिशा भर दी फाइन लेग के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए. खाता खुलता हुआ सिंहपोरा वॉरियर्स का इस छक्के की मदद से 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी हुई है सिंहपोरा वॉरियर्स की टीम इस ग्रैंड फिनाले बिग बैश T20 चैंपियनशिप कुंजर के इस मुकाबले में. टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था राइजिंग स्टार चिचलोरा ने. अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुई. 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है सिंहपोरा वॉरियर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज. Well, Azam 6 for none after the completion of ball number 1. The very first ball wavered in length, way down the leg side, and allowed the batsman Zubair to break free. He goes off the mark in style. Khan Jangir and Lona up top, Perez Zahoor and all of the bowlers. Thank you for joining us. This is JK Sports Time presenting you the live broadcast of this grand finale coming your way this afternoon. And I may remind you guys, those who are watching, and it's a good news for the Valley-based viewers of JK Sports Time that we're using a new system nowadays, and that's going to be ultra class, and it is going to be HD, even more better than that. Oh, that was a sloppy one that put down, that goes down, and that should have been taken as arm. That should have been taken a dolly of a catch put down by the way a slip fielder there. And what could have been wicket number 1, he puts down a dolly, and a juicy one goes down, and this is not the way you can win the match. जी हाँ, बिल्कुल एक जेन्युइन एज, एक बाहरी सिरा लगता हुआ इस बार बल्लेबाज जुबैर के बल्ले से. इमरान ने कोई गलती नहीं की, सटीक निशाने पे ये गेंद साधी हुई. बाहरी किनारा फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी आमिर, उनके चेस्ट से गेंद टकराई, हाथ देने में वो असफल रहे और एक आसान सा कैच एक जीवनदान बल्लेबाज जुबैर के लिए. पहली गेंद पर एक छक्का जरूर अर्जित किया था, लेकिन उसके बाद अपनी लाइन और लेंथ, अपनी दिशा सही पकड़ी इमरान ने. बाहरी किनारा कौन बनाती हुई बल्ले का बाहरी सिरा लेती हुई फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी के हाथ में ये कैच जाना चाहिए था, लेकिन वो असफल रहे कैच को लपकने में. इस बार अच्छी गेंद इमरान की, बल्ला जरूर चलाया जुबैर ने. बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं. 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहला ओवर जारी. Well, Azam, the two batters out in the middle, Zubair and his colleague ER, it is Engineer M someone, and Javed Iqbal is bowling in the very first over. He has not been so impressive with the ball in the very first over, but barring that 6, he has been able to bounce back in style and is bowling in the right areas. That catch was put down by the fielder at first slip.
and that is a good shot, and that should run away down to the backward point boundary. 4 more runs. The ball trickles onto the advertising boarding on the back portion of the backward point boundary, puts in the full length inside the 30 on the edge of the circle, the fielder there, but he doesn't manages to cut it off, and ball flies down to the boundary. 4 more runs into the double figure straight away. Singpora Warriors, they're 10 for none in over number 1, but that should have been fielded, Azam. जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रोक सही लिया था इस बार बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से। शॉट बैकवर्ड पॉइंट पर मुदस्सिर तो मौजूद जरूर थे, झपट्टा जरूर मारा था अपनी दाईं ओर, रोकने में असफल, गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए एक मर्तबा फिर यहां पर मौका बन सकता था कैच का, लेकिन ऐसा लगा था कि हल्का सा शॉट गिरा था मदन, जो कि थर्ड मैन के स्थान पर फील्ड कर रहे थे। बाहरी सिरा लिया इस बार बल्ले ने, हल्का सा शॉट गिरा ऐसा मदन बता रहे हैं। हालांकि रोकने में वो कामयाब हुए, 3 बहुमूल्य रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए मदन ने। पहला ओवर जारी, पहले ओवर की अंतिम गेंद होगी ये इमरान की। अब सामने होंगे बल्लेबाज ERM। इमरान हाईवे एंड से पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर, अच्छी गेंद इस बार, छेड़खानी करने की कोशिश, खुशकिस्मत रहे कि बल्ले का बाहरी सिरा नहीं लगा, नहीं तो नुकसान हो सकता था सिंहपोरा वॉरियर्स के लिए। पहला ओवर समाप्त, 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पे सिंहपोरा वॉरियर्स। Well, Ubair Pare, Jamsheed Vicky, Shabir Ahmed Lon, and all other beloved viewers, thank you for joining us on Jiggy Sports Time. This broadcast is brought to you by Arca Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Agri Clan Magam. Abid left to join us the broadcast. So the other beloved viewers on Jiggy Sports Time, you can send us the digital token of love through digital stars, Nisar Ahmad, Danish, Mir Bilal. These are the beloved viewers, and these are a kind of a lifeline for the Jiggy Sports Time. In the meantime, 1 done, it's 11 for none. Chase underway. 151 is what they require to win this match and lift to the title for the first time. This is the inaugural edition of Big Bash T20 cricket tournament, Kunzer, and what a wonderful success this has been. The event has been really up to the mark, and this has really been able to pull the crowd time and again. And as my colleague earlier on mentioned, that it is a crowd puller stadium of Kunzer, and it has got a historical background. Mir Bilal Ashq Hussain and but is also watching. Shabir Ahmed Malla join his 1-year shot, and Sayyid Asadullah, Lon Bilal, fresh over again is inside, out goes the batsman, down towards the backward point, and fielder lets it go through down to the boundary for more, and that boundary propelled the total to 15 for none. Farooq Malik, Abid Lefty, Lon Bilal, Walaikum Salam, all the beloved viewers, and singer Shano writes in video quality, he says about the video quality, well, we are using the device from today, and you will be glad to know that from here on you will never say that there is any kind of problem, and you would definitely love to say and drop in a comment that it is a flawless broadcast. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, पहली बार वादी में, हाँ वादी जम्मू कश्मीर में जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, इसमें एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल किया है आज जेके सपोर्ट्स टाइम के माध्यम से। अब आपको अनइंटरप्टेड अल्ट्रा HD लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके सपोर्ट्स टाइम के मंच पर शौकत अहमद भट्ट, अली मोहम्मद, मीर मुजम्मिल, शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीर मुजम्मिल के साथ साथ सुहाना आदिल, शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन पीटरसन को मोर्चे पे लगाया गया है, पारी का दूसरा ही ओवर है। जुबैर के लिए मदन पीटरसन डालेंगे, रोम बनाया इस बार, बैकवर्ड पॉइंट के इस खिलाड़ी के सिर के ऊपर से गेंद, पॉइंट बाउंड्री, बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। हल्का सा शॉट इस बार फेंका था मदन पीटरसन ने, और जुबैर ने कोई गलती नहीं की, अपने बाजुएं खोली, अपने आप को रोम दिया और गेंद को पहुंचा दिया, बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। अब फील्ड में हल्का सा परिवर्तन, लोगों के खिलाड़ी को 30 गज दायरे के अंदर बुलाया है, और बैकवर्ड पॉइंट के जो खिलाड़ी थे जो 30 गज दायरे के अंदर फील्ड कर रहे थे, अब उनको बाउंड्री लाइन 30 गज दायरे के बाहर तैनात किया है मदन पीटरसन ने। लेकिन 2 चौके खा चुके हैं मदन पीटरसन, और सिंहपोरा वॉरियर्स को जिस शुरुआत की तलाश थी वो मिलती हुई यहां पर उनको जुबैर के बल्ले से रन आते हुए। मदन हल्के कदमों के साथ एक मर्तबा फिर जुबैर के लिए स्ट्रेट खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार तीर के मानंद ये गेंद स्ट्रेट सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए।
अपनी लाइन अपना सही निशाना नहीं पकड़ पा रहे यहाँ पर मदन पीटरसन, और जुबैर काफी आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 23 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जबकि ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी। मदन एक मरतबा फिर जुबैर के लिए, इस बार रक्षात्मक तरीका अपनाने पे मजबूर किया मदन की इस गेंद ने, और जुबैर को धकेला शॉर्ट कवर्स पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन कोई नहीं मिलेगा। 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 30 बिना किसी विकेट के नुकसान पर सिंहपोरा वॉरियर्स। Well, Azam, 2 done. It's 24 for none. Thank you all the beloved viewers. Rasik Farouk and Samad Shabir, Ayaz Baba, and those whom I missed throwing out the names. I really apologize, but thank you for being patient and for being with us. Thank you Ayaz Baba and Samad Shabir and all other beloved viewers who are watching JK Sports Time this afternoon. What a match, high voltage, and this is ultra class coming your way. Don't fade away, don't go anywhere. This match is really going down to the wire. Watch this one. This is a big match of the summer. This is a village level class, and this is a village level encounter underway here at the center. GM Rother, Madan Peterson and Danish, Mir Bilal and others are watching. Thank you all the beloved viewers. Fresh show begins. Ali Mohammed and Mir Bilal. Fresh show begins. The very first ball. That's in the air. Will this be wicket number 1? The first blood. There it is. Wicket number 1. Azam reverse cupping on to that one. And the batsman throws the wicket away. That wasn't a wicket taking ball, but he got overcautious, throwing his wicket away. This is not the way. Going off to the chase of 151. जी हाँ बिल्कुल, दूसरे एंड से जो जुबैर है बल्लेबाज, उन्होंने रन जरूर बटोरे थे अपने बल्ले से, खाली उनको चाहिए था कि स्ट्राइक दे जुबैर को, और जुबैर अपना कार्य जो है वो बखूबी निभा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। ERM ने 2 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी वो स्ट्रोक के लिए चले गए, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा 30 गज दायरे के अंदर, मिड ऑफ पर आदिल फफ मौजूद थे, उन्होंने रिवर्स कप के सहारे एक आसान सा कैच लपका। सिंहपोरा वॉरियर्स को लगने वाला पहला झटका, तीसरे ओवर में 24 1 विकेट के नुकसान पर सिंहपोरा वॉरियर्स फिरदौस मलिक पवेलियन में आ रहे हैं। Well, a rising star Chichilura, they're in a hurdle. Somebody writes, and Rebel Raja, thank you for your love, Raja Tahir and Mir Jaz, all the beloved viewers. And there comes the famous campaigner of their side, the man who loves to lead up front, Raja Tahir and Umar Bukhari. And it's 24 for the loss of 1 Umar. And on strike will be Firdaus for the first time. GM Rathar, Ahmed Bhatt and all other beloved viewers are watching this wonderful coverage. 23 for none. मैं सभी दर्शकों को बता दूं, जैसे मैंने पहले ही मेरे साथी मुनव्वर भाई कह रहे थे कि आज जो ये लाइव नशरियात है ये आज उन खिलाड़ियों पे है जो कि विलेज लेवल से निकल के आते हैं। विलेज लेवल टूर्नामेंट था ये, और जेके सपोर्ट्स टाइम का मंच जो है आप तक आज ये विलेज लेवल टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले बिग बैश T20 कुंजर, उनके लाइव तबसरात आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज जिन खिलाड़ियों को हमेशा आप यहाँ पर देखते हैं उनमें से आज एक खिलाड़ी आदिल काचरू जो है वो इस मैच में गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं, और बिल्कुल इस समय वो हमारे गेस्ट जो गेस्ट शामियाना है हमारा उसमें वो बैठे हुए हैं, उसमें वो विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो रोज जेके सपोर्ट्स टाइम पर आप आदिल काचरू को खेलते हुए देख रहे हैं, आज आप उनको देख रहे हैं कि इस विलेज लेवल टूर्नामेंट में वो खिलाड़ियों को सराहने के लिए यहाँ पर आए हैं। Well, a good sign that Adil Kachru has been invited to be the guest of honor for this all-important grand finale. He is here in the guest panel area. Bilal Abdullah, Ahmed Bhatt and Tahir Ibn Majid. Fresh ball goes and bows, and good ball right on money. On the chance of a run out. Well, the chance gone begging before because he was unable to react in time. And that is why Firdaus Malik manages to get across for a single. Score moves to 24. For the loss of 1, we are in over number 3. Shabir Rathar and Arif Akbar, Tahir Ibn Majid and all of the beloved Azam. The plot should be clear from here on that Singpora Warriors, they're in with a chance, and they should give themselves a kind of a self-belief and a dedication, and that ultra class is needed from their side if they manage to bat out, and they should make sure that they need to give themselves a belief that we are in with a chance and we can chase down this very target. Somebody writes in, please mention myself Munawar Tanveer. You can find me on Facebook through Munawar Speaks, and I got my colleague Pirzad Azam in my com box.
जी हाँ बिल्कुल, बट खयाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर कैसर, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौफीक गनाई, शुक्रिया आपका हमारे साथ जेके सपोर्ट्स टाइम के मंच पे जुड़ने के लिए। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई सिंहपोरा वॉरियर्स की टीम। इमरान हाईवे से जुबैर के लिए बाहरी सिरा, एक मरतबा फिर आमिर के हाथ से कैच छुटका और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि एक तो कैच छूटा आमिर के हाथ से और यह दूसरा कैच है जो उनके हाथ से छूटा जुबैर का, और गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। यहां पर काफी मुसीबत राइजिंग स्टार चिचलोरा के लिए। Well, that's not the way you can back your bowlers. Look at that, when ball didn't have enough fly, enough wings to fly, enough legs to carry down to the boundary. But look at this man, he parried the ball down to the third man. What could have been a catch ended up as a 6. And that's half a dozen coming their side. And somebody writes, and Dheeraj Wadhwa is watching. Thank you for your love, Wadhwa. And Mai Majid and Ayaz Baba, these are the beloved viewers on JK Sports Time. It's because of Anthem Sports India, Fashion Feast, the Arc of Fenestration, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion branded store. We are being able to provide you the flawless, the wonderful, outstanding coverage day by day, and today we are brought on something new. Thanks we must be thanking all our beloved sponsors. Oh, that is a beautiful shot, back to the bowler, down to the long off, for more runs, Azam. This is another top-notch, wonderful shot. Whatever he touched today turns it into a goal. But look at that, thanks to the fielder Silip who put down that lollipop, that juicy one, and parried that to the boundary. But we were talking about the thanking our beloved sponsors. It's because of their love we have been able to provide you the ultra class and the ultra HD coverage from this very sunny. We shall carry on with the next coming weeks and next coming years inshallah on JK Sports Time. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, शुक्रिया हमारे सभी स्पॉन्सर्स का जो हमारे इस जेके सपोर्ट्स टाइम के मंच को हमेशा ताउन देते हैं। इमरान एक मरतबा फिर जुबैर के लिए, इस बार एक हाइक, एक स्ट्रोक के लिए चले गए थे जुबैर। हालांकि मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर मुजम्मिल के दस्तानों में। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इमरान जो है अनलकी रहे हैं। 2 मरतबा उन्होंने जुबैर को जो है स्लिप कॉर्डन में कैच कराया था और दोनों मरतबा आमिर जो थे वो कल्प्रिट थे। दोनों मरतबा आमिर के हाथ से कैच छूटा और एक मरतबा तो आमिर के हाथ से कैच छूटने के बाद अभी 6 रन के लिए गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर भी चली गई। इमरान हाईवे एंड से जुबैर के लिए एक मरतबा फिर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जुबैर के लिए, इस बार जुबैर को बैकफुट पर धकेलने पर मजबूर कर दिया इमरान ने। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, रन कोई नहीं मिलेगा। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर यह कहा जा सकता है कि इमरान जो है अनलकी रहे इस ओवर में। Well, a big match and worthy of the final, and your players are dropping catches like that. This is not going to help your side, and we might be witnessing from here on their shoulders can start dropping down quite a bit, because that is really going to discourage your pacers, your bowlers up front, and that should have been taken. But look at that catch, and the catch was put down and the bowlers parried down to the boundary, and it's kind of adding insult to the injury. Where you should have been getting a wicket, you have gifted your opponent side 6 more and a lifeline. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, सहमत हूं मैं आपकी टीम से, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परामेंट है वो राइजिंग स्टार चिचलोरा का भी टेस्ट होगा। क्या यहाँ से, हालांकि उनके कंधे जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इमरान, आदिल, फाप, मुजफ्फर, मदना, अरशद भाई सब टीम को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये खेल जो है अपना करवट कभी भी बदल सकता है। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी संभव है। ये कभी नहीं कह सकते हैं इस क्रिकेट के खेल में कि एक खेल जो है वन साइडेड हुआ है, एक वन साइडेड अफेयर है, क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए तब तक कोई भी नतीजा इसमें संभव है, पॉसिबल है। मदन पीटरसन एक मरतबा फिर दोस्त मलिक के लिए स्ट्रोक के लिए चले गए। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। फिरदौस मलिक एक अनुभवी बल्लेबाज, एक दीवार है सिंहपोरा वॉरियर्स की जानिब से। अगर उनका विकेट मिलता है यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा विकेट होगा यहाँ पर राइजिंग स्टार चिचलोरा के लिए। इस बार मदन पीटरसन धीरे धीरे अपनी लाइन और लेंथ पकड़ते हुए इस बार रक्षात्मक तरीके से खेलने पर मजबूर किया फिरदौस मलिक को। बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। मदन फिरदौस मलिक के लिए इस बार टैप कर दिया है हल्के हाथों से, खिलाड़ी मौजूद है इमरान, रन कोई नहीं मिलेगा वहां पर। अभी तक अच्छा ओवर जाता हुआ ये मदन पीटरसन का पारी का चौथा ओवर, अभी तक 4 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है, 35 1 विकेट के नुकसान पर।
मदन फिरदौस मलिक के लिए इस बार बाहरी किनारा, और इस बार आमिर रोकने में कामयाब हुए। अब ऐसा लग रहा है कि राइजिंग स्टार चिचलोरा के खिलाड़ी जो है अब बल्लेबाज को गेंदबाज को बैकअप कर रहे हैं। इस बार पुल कर दिया है, खिलाड़ी तो है वहां पर, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए आखिरी गेंद में, अंतिम गेंद में चौका मिलता हुआ। 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 39, 1 विकेट के नुकसान पर 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई सिंहपोरा वॉरियर्स। Well, all is well, that end is well, but that was a bad ploy. That was a bad ball straying down the leg side. Allow the batsman little swell on its axis and pulling that one down to the nice hook to away down to the backward skylag boundary, and that boundary takes the score to 39 for the loss of 1. We are in over number 5. Mir Mohammad Akib Yunus and all other beloved viewers, thank you for joining us. Thank you for tuning into the live broadcast this afternoon. We are underway with the chase, and this broadcast is brought to you by Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, followed by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Papur, and MHM Multi-Fashion branded store, Agricolan Magam. And Yunus is watching. Thank you, Yunus, for your love, for being patient. And Ali Mohammed, Miriru and Yunus are watching. This match is underway between Singpora Warriors and Rising Star Chichalura. Zad, Yunus, Ali Mohammed. Chichalura, they batted first. They finished their campaign on 150. That means they're given 151 to chase, and in return and in pursuit of those 151, Samir Watson writes in and Miriru writes in. Thank you all the beloved viewers. Singpora Warriors are 39 for 1. They still need 112 from remaining 96 balls with 9 wickets in hand. आमिर को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया है, ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार आमिर की गेंद दिशाहीन गेंद। आमिर जिन्होंने किए जुबैर के 2 कैच ड्रॉप किए और कप्तान ने उनको लिफ्ट करने के लिए एक अच्छी रणनीति अपनाई है यहाँ पर। अब आमिर इस रणनीति पे कितने खरे उतरते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उनको एक मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए, उनको उस कैच जो उन्होंने ड्रॉप किए उस माइंड से निकालने के लिए उनको गेंदबाजी थमाई है। जबरदस्त गेंद इस बार आमिर की, और अपील भी यहाँ पर हुई है। हालांकि एक लेट अपील थी सभी नजदीकी खिलाड़ियों के, लेकिन नकारा अंपायर तौसीफ ने। आमिर अगर चाहे तो अपने वो 2 कैच बुला सकते हैं, एक मौका है उनके पास गेंदबाजी में। अगर वो गेंदबाजी से कुछ चमत्कार यहां पर कर सकते हैं तो वो कैच 2 जो उनसे छूटे थे उसको वो बुलाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि आमिर एक युवा गेंदबाज है चिचलोरा की जानिब से। फाइटिंग स्पिरिट यहां पर दिखाना होगा राइजिंग स्टार चिचलोरा को अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है। अच्छी गेंद इस बार आमिर की, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद कोन बनाती हुई अंदर की ओर आई। बल्लेबाज ने आखिरी समय पर जाने भर दिया, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। अब्दुल मजीद शाहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतराम लोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद मकबूल परे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। लोन शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। आमिर एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप से बाहर, एक मरतबा फिर दिशाहीन गेंद और तौसीफ का इशारा किए वाइड बॉल होगी। आमिर हालांकि पिछली गेंद सटीक निशाने पे आमिर ने जरूर डाली थी, इस बार हल्की सी वाइड और बल्लेबाज स्ट्रोक के लिए जरूर गए थे, उनके रीच से दूर थी ये गेंद। विकेट कीपर मुजम्मिल के दस्तानों में कोई रन नहीं। समीर इब्न रहीम, जैद, सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का प्यार। अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई, कंधे का इस्तेमाल इस बार किया था गेंदबाज आमिर ने, और बल्लेबाज जुबैर ने जांचा परखा और जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एम सिकंदर, यावर, हमीद रथर, समीर इब्न रहीम, शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। इसके साथ साथ बट अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीशान बट भी हमारे साथ जुड़े हुए, शुक्रिया आप सभी दर्शकों का प्यार के लिए। खान आबिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि आपका प्यार जो है हमें स्टार्स के जरिए भी मिल सकता है, आप हमें स्टार्स भेजिए और अपना प्यार दिखाइए हमारे लिए, हमारे मंच जे के सपोर्ट्स टाइम के लिए। Well, in the meantime, 41 for 1. What a match. What a build-up. Crowd starts coming in, thronging into the center. Believe me, dear beloved viewers, this match is really going down to the wire. Khan Abid, Faisal, Zishan Bad. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Papur, and MHM Multi-Fashion branded store. Oh, this time it's in the air. Will this be out? Yes. He gets it. And there goes wicket number 2. Azam says that he gets him in the end. And last lap, finally last lap over the batsman there for the bowler, and Amir Bingley among the wickets straight away.
जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि उनके मूड को, उनको टेम्पो को लिफ्ट करने के लिए आमिर ने इसी खिलाड़ी जुबैर के 2 कैच छूटे थे और ये एक मौका उनको दिया कप्तान ने अपनी गलती सुधारने का, और निराश नहीं किया आमिर ने। जबरदस्त गेंदबाजी, 3 गेंदे सटीक निशाने पर मजबूर किया इस बार जुबैर को उनको लीव करने के लिए, और चौथी गेंद बॉडी लाइन पर और जुबैर ठीक तरीके से खेल नहीं पाए। ऊपरी सिरा शॉर्ट फाइल लेग पर कैच, आमिर भिंगले और अपना जो एक मिशन पे वो भेजे गए थे कैप्टन द्वारा, उसको वो उन्होंने बखूबी निभाया और पूरा किया। जुबैर पवेलियन वापस। Well, exactly. We're seeing the back of second one. The second blood is drawn. Trams Lone Nawaz, Hussain Ali, Aru Shakir and Aru Shakir. These are the beloved viewers on JK Sports Time. Thank you for joining us on this broadcast. We were talking about the sponsors are playing a very vital role and a pivotal role in bringing this live broadcast to all our beloved viewers across the globe. And at the moment, Gulzar Ahmad is also watching alongside Tariq Maknu and Educate Hilal and Mir Hassan. These are the beloved viewers are also catching the live broadcast from their areas. They're watching this wonderful match and they were here at the center. But in the meantime, they're in a hurdle. Look at Azam. They're in a hurdle. And at this very crucial juncture, pep talk might be going on. That conversation might be going on. And Madan will be charging up a bit his guys. And he might be giving them precious tips at this very crucial juncture of the game. He might be telling them bowl in the right areas like Bingley does. Bingley bowled 3 balls and he was dugging in short time and again, and that was another one pitched off a delivery, and that raised it up to the shoulder height, even above the rib cage, and batsman wanted to hook that one off the top edge ball, carrying in the air, ballooning up in the air, and fielder does well, holding underneath, settling underneath and hold this on to the catch, and there we saw the wicket number 2 coming their sideway. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, मैं इसका श्रेय जो है राइजिंग स्टार चिचलौरा के कप्तान को देना चाहूंगा, जिन्होंने ये देखा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आमिर ने इसी खिलाड़ी के 2 कैच ड्रॉप किए थे और उन्होंने आमिर को मौका दिया कि इस खिलाड़ी को वो आउट कर सके, और आमिर ने वो करके दिखाया, और ये एक उपलब्धि है, एक कामयाबी यहाँ पर आमिर की। और आमिर जिस प्रकार के गेंदबाज है, अब वो काफी ज्यादा हावी होंगे सिंहपुरा पर। ऑफ स्टंप से बाहर इस मर्तबा ये गेंद ज्यादा बाहर, टप्पा खाने के बाद बाहर की और कौन बनाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर। आमिर को चाहिए कि अपना ग्रिप, अपनी लाइन और लेंथ यहाँ पर पकड़े और ज्यादा फ्रीबीज यहाँ पर ना दे, ज्यादा फ्रीबीज ना दे यहाँ पर सिंहपुरा वॉरियर्स के लिए। फिरदौस मलिक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं और क्या लाजवाब बात होगी यहाँ पर राइजिंग स्टार चिचलौरा के लिए अगर वो फिरदौस मलिक का विकेट यहाँ पर लेते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव के लिए जरूर गए, हालांकि अपील जरूर की थी, अपील में विश्वास कम था, उत्साह ज्यादा, नकारा अंपायर ने, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति होगी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान पर सिंहपोरा वॉरियर्स 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। Well, Azam, if we talk of the current run rate, that isn't bad. They're 42 after the completion of 5 overs with 1 over to go in the mandatory power play. They are total 15 overs at their disposal. That means 90 legitimate deliveries are going to come, and they still have 8 wickets in hand. But look at this over bowled by Bingley, and rightly mentioned by you yourself that captain has done a good thing. That to lift up the morale of his guys, and morale of his guy who put down these 2 dollies, these 2 juicies there at the first slip. He was brought on with the ball, and you mean that captain given him an opportunity? Oh dear, very lacking those skills of taking holding on to the ball. Let's say if you are unable, if it is a nightmare with the field for you, now you have an opportunity to use the ball to your level best. Let's showcase your talent with the ball and tend to bring a wicket our ways, and he was able to castle wicket number 2, and he was able to drown the bowler in the form of wicket number 2. Now they are 42-4. That is a wonderful shot. That is a great shot. That is 3 twice. Wonderful shot down to the mid-wicket boundary. 6 more from Ayub, and that 6 takes the score to 48 for the loss of 2. 2 shy of team 50. Ayub, the umpire, signals that's a 6. Stand and deliver, and that was a wonderful shot of the back foot on that occasion. नए गेंदबाज शाहिद को तलब किया था, लेकिन शाहिद अपनी वार्म अप डिलीवरी की जो लेंथ है, जो स्पॉट है, वो गलत फेंक बैठे। और फिरदौस मलिक ऐसे बल्लेबाज है नहीं जो बख्शेंगे। फिरदौस मलिक एक ऐसे बल्लेबाज है जो अंत तक खेलना पसंद करते हैं, और जो ही लूज गेंदें उनको मिलेंगे वो बख्शने वाले खिलाड़ी तो है नहीं।
इस बार एक फंबल वहां पर होता हुआ और एक मौका था वहां पर और दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया यहां पर और अब स्ट्राइकर रहेगी नए बल्लेबाज बिलाल के पास। फिरदौस मलिक यहां पर की रहेगी सिंहपोरा वॉरियर्स की चेज के लिए। यहाँ पर जो हमारे दर्शक जिन्होंने हमको स्टार भेजे हैं, शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। सईद सहीर ताहिर आर, थैंक्स आप सभी दर्शकों का हमें स्टार्स भेजने के लिए। आप सभी दर्शक जो हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, जेपी सपोर्ट्स टाइम के मंच को प्यार करते हैं, उन सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमें स्टार्स भेजना ना भूलिएगा। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जिन्होंने हमको स्टार्स भेजकर अपना प्यार जाहिर किया है। इस मरतबा एक मरतबा फिर शाहिद की जो गेंद थी, इस बार स्ट्रोक के लिए तो जरूर गए थे बल्लेबाज बिलाल, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर मुनव्वर भाई आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जो खेल है अब इट्स ऑल अबाउट विकेट्स जैसा कि आप कहते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास विकेट शेष है तब तक रन बनाने आसान होंगे सिंहपोरा वॉरियर्स के लिए। और राइजिंग स्टार चिचलोरा को जो भी यहाँ पर इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है गेंद को, सीधे बल्ले से स्ट्रेट सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए गेंद बाहर चली गई है और ये नो बॉल का इशारा भी आता हुआ यहां पर अंपायर अयूब का और फ्री हिट होगी ये। जी हां बिल्कुल, 4 रनों के लिए जो गेंद है वो सीमा रेखा के बाहर चली गई है, माफ कीजिएगा। अब ये एक मरतबा फिर मौका होगा यहां पर बल्लेबाज बिलाल के लिए, क्योंकि वो स्टेप कर बैठे हैं गेंदबाज शाहिद। और अब फ्री हिट का अवसर, क्या कर पाएंगे फ्री हिट पर बिलाल? शाहिद बिलाल के लिए ऑप्शन से बाहर, अच्छी गेंद इस बार और इस बार स्ट्रोक लगाने में नाकामयाब बल्लेबाज और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर 54 रन 54, 54 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक रन रेट की बात की जाए, मेरे साथी मुनव्वर भाई कह रहे थे कि रन रेट बिल्कुल, रन रेट जो है काफी अच्छी है यहां पर सिंहपोरा वॉरियर्स की और ये सिर्फ विकेट्स का खेल रहेगा जहां तक मेरा अनुमान है। विकेट्स सिंहपोरा वॉरियर्स के पास है तो गेम उनके साथ साथ चलेगी। राइजिंग स्टार चिचलोरा विकेट्स लेगी तो ये मुश्किल होगा सिंहपोरा वॉरियर्स के लिए। इस बार पुल जरूर किया है खिलाड़ी की पोस्ट से बाहर, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। Another pull shot, and this time fielder was there. He was set for that aerial shot, but he was unable to get to the ball, and ball flies in the air and after a couple of bounces into the mid-on, wideish mid-on boundary for 4. 58 for 2. Over number 6, last ball coming up. Mir Mohammad Akif, thank you for your love and support. It's Mir Mohammad Akif and Miraj, but these are the bowlers this time. Up there in a edge, hop on a shot, back to the ball, a 1-benny run. It's 58 for 2, 6 done. Chasing 151 Azam. What do you think? They are 58 for the loss of 2. They need now in double figures and they need below 100 now. What you think at the moment? But keep this very thing in your mind that this is the game of glorious uncertainties. जी हाँ बिल्कुल, क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी जो पासा है वो पलट सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि राइजिंग स्टार चिचलोरा जो थी वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी, लेकिन मिडल में जो है उनके विकेट्स जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और फिर अंत में कुछ स्ट्रोक्स ज़रूर लगाए थे, लेकिन जो स्कोर 200 के आसपास नज़र आ रहा था वो 150 तक सीमित रह के हो गया। लेकिन अब सिंहपोरा वॉरियर्स ने की रन रेट की बात की जाए तो काफी बढ़िया रन रेट मेंटेन की है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। तो राइजिंग स्टार चिचलोरा के पास एक विकल्प है, वो है विकेट्स लेने का। विकेट्स जब तक राइजिंग स्टार चिचलोरा लेती जाएगी तब तक वो सिंहपोरा वॉरियर्स को बैकफुट पे धकेलने में कामयाब होती जाएगी। विकेट्स यहां पर की होगी राइजिंग स्टार चिचलोरा के लिए और सिंहपोरा वॉरियर्स जब तक विकेट्स अपने हाथ में रखेंगे और खासकर फिरदौस मलिक का विकेट जब तक उनके पास रहेगा, एक उम्मीद, एक आशा उनके पास जरूर रहेगी कि इस गेम को वो काफी क्लोज या फिर जीत भी सकते हैं। लेकिन क्रिकेट सब कुछ, क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी पासे पलट सकते हैं। बढ़िया गेंद इस बार आमिर की, फिरदौस मलिक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, आखिरी समय पर अपनी कलाइयां ड्रॉप करते हुए गेंद को जाने पर दिया, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। अच्छा स्पॉट पकड़ते हुए यहां पर आमिर। Well, a kind of shouldering arms on that occasion and lets it go through. And wicketkeeper does the rest in style. We are in over number 7 and Amir Bingley continues to bowl. 58 for 2. Amir with one slip in place goes and bows to Firdaus, and Firdaus comes down the track and guided it down towards the third man. Madan is there
And before he could return the ball, the two batters scampered through for a quick single. And Shakir Bhatt, thank you for your love. Mir Mohammad Aqib, Mudassir Bhatt and all other beloved viewers. 59 for 2 over number 7 in progress. Third ball coming up. Amir Bingley conceded 4 and has picked up a wicket. But Shaukat writes in, love you Pirzada Azam. And Sam to you brother, thank you for your love. Mir Mohammad Aqib says bowling side is on fire. Is it? जी हाँ, जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी हुई है ऐसा कुछ लगा तो नहीं, हालांकि कुछ गेंदें जरूर आमिर बिंगले ने अनुभव और विश्वास के साथ डाली थी, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर और बिलाल फिरदौस मलिक के लिए कोई माफ कीजिएगा बिलाल स्ट्राइक पर है, बिलाल के लिए कोई परेशानी नहीं, गेंद को डिफ्लेक्ट पर कर दिया, गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो जो फ्लो ऑफ रन है वो यहाँ पर कंटिन्यू चलता हुआ सिंहपुरा वॉरियर्स के लिए। Well, runs are coming at great ease. They are 63. They have been able to break free. They have been able to relieve the pressure, and they have been able to score runs at greater pace. And look at that one, length ball on off, and Bingley, who was loving to pitch in short, dog in short. Now look at this man, he's bowling length, and this tells how their body language is dropping down with every run being scored. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, इस बार आमिर ने कुछ अलग करने की कोशिश की, लेंथ के लिए चले गए, हालांकि गेंद में हल्की सी स्विंग जरूर देखने को मिली, कोन बनाती हुई बाहर की ओर चली गई और बल्लेबाज दूर रहे। एक मरतबा फिर पुल कर दिया है इस बार, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर रियाज मौजूद और रन एक ही मिलेगा, थ्रो आएगा विकेट कीपर के दस्तानों में। आमिर कोशिश कर रहे होंगे कि फिरदौस मलिक का विकेट अगर उनको मिले तो एक बड़ी उपलब्धि होगी राइजिंग स्टार चिचलोरा के लिए। अगर किसी भी तरह उनको इस गेम में वापस आना है तो रेगुलरली उनको रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स पिक करने होंगे, तभी इस फाइनल मुकाबले में वो बने रह सकते हैं। हालांकि आसानी से वो रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं सिंहपुरा वॉरियर्स के बल्लेबाज। 2 विकेट भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रन्स जो है, हालांकि खराब दिशाहीन गेंद इस बार आमिर की, और गेंद स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीचों बीच सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दिशाहीन खराब गेंदबाजी इस बार आमिर की। लगातार कुछ फ्रीबीज यहां पर हर ओवर में मिल रही है सिंहपुरा वॉरियर्स को, और वो बखूबी उसका फायदा उठा रहे हैं। Exactly, they are really taking them on. They're not missing any opportunity. Well, to tell our beloved viewers that we got Adil Kachru, the guest of honor for today's grand finale, which is underway here at the Big Bash T20 cricket tournament, Kunzer, and it was a kind of an initiative launched by the young guys of Kunzer area to promote the village level talent and to unearth that latent potential of the village level cricketers, and this is the outcome of that very initiative and their hard work. It was not easy, it was a kind of hard nut to crack, but they did in style, and we are underway with the grand finale of a Big Bash T20 cricket tournament, Kunzer, and this is the grand finale coming your way. Singpora Warriors need 151 to win this match. एक मरतबा फिर मदन पीटरसन को मोर्चे पे लगाया है, पहले ही गेंद पर एक बाहरी किनारा, लेकिन कैच जो था शॉट गिरा वहां पर फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी इमरान से। मदन पीटरसन विकेट की तलाश में, विकेट सी उनको इस गेम में वापस ला सकती है। इस बार सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार स्ट्रेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बिलाल के बल्ले से निकलता हुआ एक और दंदनाता छक्का। Well, Azam, nothing is working, and he did bowl very well. That found an edge, but the slip fielder, they're all showing lackadaisical approach, kind of imprudence. But look at Madan, he's feeling the heat right now. He's unable to understand what to do, what kind of a ball to brought on, and what kind of a bowler to brought on under the certain circumstances. जी हाँ बिल्कुल, 7 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो है 74, 2 विकेट के नुकसान पे काफी बढ़िया रन रेट के साथ सिंहपुरा वॉरियर्स इस चेज के पीछे, और राइजिंग स्टार चिचलोरा इस गेम में पीछे होती हुई विकेट्स उनको इस मैच में वापस। जी हाँ बिल्कुल, विकेट्स ही उनको इस मैच में वापस ला सकते हैं। सिंहपुरा वॉरियर्स काफी अच्छे चेज के साथ चलते हुए इस समय पर 7.2 ओवर के बाद जो राइजिंग स्टार चिचलोरा है वो 46 रन बना चुकी थी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी तेज शुरुआत यहां पर सिंहपुरा वॉरियर्स की जानिब से। मदन पूरी कोशिश कर रहे हैं एक विकेट की, लेकिन अभी तक असफल रहे हैं मदन।
क्योंकि जाराना बल्लेबाजी देखने को मिली है सिंहपोरा वॉरियर्स की जानिब से, चाहे वो पहले जुबैर हो या अब बिलाल हो। इस बार एक अवसर हो सकता है, हालांकि खिलाड़ी आगे हैं वहां पर, उनके सिर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। काफी तेजी यहां पर भरती हुई है बल्लेबाज बिलाल ने, और वो ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेशर, कोई दबाव के सहारे नहीं खेल रहे, बिल्कुल फ्रीली वो हर स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। अब मदन एक मर्तबा फिर बिलाल के लिए, एक मर्तबा फिर ये लंबा स्ट्रोक बिलाल का, गेंद लोगों सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Well, back-to-back sixes, hat-trick of sixes. What a man he has been out in the middle. Power that one all the way over mid-on boundary, all the way down to the boundary. 6 more and 3 on the trot. Could it be 4 and 4? Let's wait and watch. Fourth ball coming up. Madan will bowl the final ball, and can it be 4 and 4? And has knocked him or cleaning him up. Clean bowled, and simply has got the last lap over the batsman there. But look at umpire Ayub. He signals out like that. He replicated what Billy and Billy Bowden used it to do, that inverted finger on that occasion, and that's it. Wicket number 3 goes down, 86. Belatedly they got the wicket, but look at that absolute carnage which continued for almost 15 minutes, and for that Carter, and it looked like that Singpora Warriors are going over the line with ease. All of a sudden they lost a wicket, but still they are in with a chance. Not only in with a chance, Azam, I should say, they are really on top of the match. They are in the ascendancy at the moment. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, अब तो रन कम बनाने हैं और गेंदें ज्यादा बची है। 65 रनों की दरकार है यहाँ पर, और गेंदें जो है 72 है उनके पास 7 विकेट के साथ। तो ये फिरदौस मलिक भी क्रीज पर खड़े हैं, तो ये कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं हम, हालांकि हम श्योरिटी के साथ ये बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी संभव है इस खेल में। तो बने रहिएगा हमारे साथ जेके सपोर्ट्स टाइम के मंच पर। और यहाँ पर अभी भी 65 रनों की दरकार है सिंहपोरा वॉरियर्स को, 7 विकेट उनके पास शेष है। राइजिंग स्टार चिचिलोरा को अगर किसी भी तरह इस मैच में वापस आना है तो उनके पास एक ही विकल्प है, और वो है विकेट्स। Well, exactly, they need wickets, and wickets column is important at any instant of the game, and so is the case with today's match. They need wickets, and they need wickets in heap, they need wickets in bundles, they need wickets in packs, but at the moment they have still 7 wickets in hand, and Madan led side, they need only wickets. If they have to focus on anything, that is getting wickets out of every ball, and if not of every ball, at least every over they need a wicket, and that can really set the tone for the good chase and a wonderful match. Well, this match is brought to you by JK Sports Time in collaboration with Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Fista, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store. Mir Mohammad Akib, Ataullah Dar, and Salim Khiru and others are watching this live broadcast. You can continue sending us. You can continue sending us stars on JK Sports Time. We are really indebted to your love time and again. And I'm again gonna throw it out that we are really indebted to your love. Keep sending us the digital stars. आमिर भिंगले नए ओवर की शुरुआत करते हुए कुछ अपील जरूर की है यहाँ पर, और अब स्क्वायर लेग के अंपायर का इशारा आया कि गेंद जो है वो बल्लेबाज के पैड से, थाई से टकराकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, विकेट से एक ऐसा यहाँ पर विकेट से एक ऐसी दवा का काम यहाँ पर कर सकती है राइजिंग स्टार चिचिलोरा के लिए। खाली विकेट ही उनको इस मैच में वापस ला सकती है। आमिर चले इस बार फिरदौस मलिक के लिए, अच्छी गेंद, भटकी हुई गेंद, फिरदौस मलिक पुल करने के लिए जरूर गए थे लेकिन नकारा। यहाँ पर कुछ अपील जरूर की थी यहाँ पर। Well, Azam, once again Amir Bingley manages to pitch in shot, dog in shot, but why that is lacking from their side? If Bingley knows that he's been able to keep the batsman under check by bowling those short deliveries, those nasties, why he is bowling in between those hop trackers, allowing Firdaus Malik and others and Firdaus Malik and company to cash on with the boundaries? जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, फिरदौस मलिक एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं सिंहपोरा वॉरियर्स के, मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल एक छोर संभाले रखते हैं हमेशा सिंहपोरा वॉरियर्स के, और इस साल कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स में उन्होंने फाइनल में रसाई हासिल की है सिंहपोरा वॉरियर्स ने एक मरतबा फिर, और इस बार शायद किनारा लगा है। अपील जोरदार, अंपायर की उंगली हवा में, और जोरदार अपील यहाँ पर होने के बड़ा झटका होगा। हालांकि फिर
फिरदौस मलिक खुश नहीं है और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और इस तरीके से फिरदौस मलिक को वापस जाना होगा। यहां पर ये चौथा झटका लगता हुआ सिंहपोरा वॉरियर्स की टीम को। फिरदौस मलिक पवेलियन वापस। Well, Azam, we can't say anything, but there were genuine some sort of a nick because the ball deviated from its original path. And we can see that there was no big gap available between the bat and the ball, or between the body and the ball, because it was pretty close to the body and the bat, so we can't say anything. I think that has really found the nick of the blade, and that parried the ball quite a bit and deviated from its original path and down to the wicket keeper, diving full length to his left hand, holds on to the catch, and Firdaus Malik departs. A wonderful decision, I should say, in the end. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, यहाँ से तो ऐसा साफ लगा। हालांकि शाम को आप देख सकते हैं, शाम को हमारे सभी दर्शक देख सकते हैं कि ये जो डिसीजन था अंपायर का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्लोज था, क्लोज कॉल थी, लेकिन यहाँ पर एक ही एंगल उनके पास मौजूद था। गेंद जो ही लेग स्टंप की ओर जा रही थी तो गेंद जैसे ही बल्ले के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी तो गेंद में जो डिफ्लेक्शन थी वो साफ नज़र आई। गेंद जो है बिल्कुल फाइन लेग की ओर डिफ्लेक्ट हुई और विकेट कीपर ने अपने ग्लोव्स के सहारे गेंद को लपका और फिरदौस मलिक जो कि अच्छा खेल रहे थे वो पवेलियन वापस। तो कुल मिलाकर चौथा झटका लगता हुआ सिंहपोरा वॉरियर्स की टीम को। अभी भी 65 रनों की दरकार 68 गेंदों पर। Well, Amir, Bilal, RSC, Latifani and all other beloved viewers, we definitely love to include the names Mudassir Ahmed and all others who are watching this live broadcast on JK Sports Time. What a match underway, 86 for the last of 4, and Amir Bingley is continuing. Samir Watson is watching, Kare Bashir is watching, and Bilal Ahmed. These are the beloved viewers on JK Sports Time this afternoon. And Amir Bingley continues to bowl. He's conceded 13 and picked up 2. And somebody says, I told game will be do or die. Well, every game is a do or die situation, and every match won't be a dead rubber. Sometimes it happens, but this match is again coming alive, and this is really going down to the wire, and it's turning the table. It has started turning the tables, and find it out alongside us what's gonna come your way in the next passage of play. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, खेल जो है अपना रंग अपना रूप कभी भी बदल सकता है और यहाँ पर आमिर चले नए बल्लेबाज के लिए, मुदस्सिर के लिए। इस बार अच्छी गेंद विकेट में साधी हुई है गेंद रक्षात्मक तरीके से। नए बल्लेबाज इजाज आए हैं, शायद नए बल्लेबाज उन्होंने खेला है स्ट्रोक लॉन की जानिब, वहाँ पर गेंद को खिलाड़ी ने फील्ड किया और 1 रन मिलेगा। अब दोनों जो बल्लेबाज है स्ट्राइक पर वो नए बल्लेबाज रहेंगे दोनों। इजाज ने इस गेंद पर अपना खाता खोला, मुदस्सिर अभी अपना खाता नहीं खोल सके, अपनी पहली गेंद का सामना आप करेंगे। आमिर के गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए विकेट्स कब इस मैच का पासा पलट देंगी ये कोई नहीं कह सकता है। आमिर चले इस बार तिरछे बल्ले से मोड़ा है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक मौका है, थ्रो जरूर मारा था वहां पर मुजम्मिल ने, लेकिन विकेट से काफी दूर। हालांकि अगर ये थ्रो सटीक सही निशाने पे विकेट्स पे जाकर लगता तो मुश्किलात हो सकती थी बल्लेबाज के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर जो है वो पहुंचता हुआ 88, 4 विकेट के नुकसान पे पारी के 10वें ओवर में है हम। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर स्कोर जो है वो है 9 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर शौकत गनाई। शुक्रिया आपके प्यार के लिए आमिर परा मलिक ऑफिशियल, शुक्रिया सलीम शबीर लोन, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके सपोर्ट्स टाइम का मंच हमेशा आपके लिए उपस्थित होता है, चाहे वो कोई बड़ी लीग्स हो या इस तरह के टूर्नामेंट्स जो कि विलेज लेवल टूर्नामेंट्स का इनेकाद होता है यहाँ पर कुंजर में। तो जेके सपोर्ट्स टाइम का मंच हमेशा आपके लिए उपस्थित है, हमेशा आपके लिए हाजिर है। शुक्रिया शौकत गनाई, शाह नईम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें अपना प्यार स्टार्स के जरिए भेज सकते हैं। हमारे लाइव नशरियात को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। Shaukat Sultan, Shaukat Bach and Shah Naeem, all the beloved viewers, thank you Shaukat Sultan, Shaukat Bach and Shah Naeem for your love and support. Keep sending us the digital stars. Wani Said join us, thank you once again. And somebody writes in, thank you Azam Bhai, Gari Bhat and Malik Afan and Umar Kadir. These are the beloved viewers, these are the passionate viewers of JK Sports Time and the regular viewers. Adil Bashir,
adding more taste to the contest. Thank you, Shah Tanveer, Sherat Kaur and Ghazi Bhatt are watching this wonderful coverage. Well, Madan will begin the fresh over. Ghazi Bhatt join us. Sharif and Abid Beg is watching alongside Mohammed and Danishwani, Saim Samir and Ail Nazir. These are the beloved. Walaikum salam to all the beloved viewers. 88 for the loss of 4. Wasif Javed is watching. Wonderful ball. Keeps that one out towards the back with a point. Deficit in front of point. No run there. It's 88 for the loss of 4. Javed Sultan, Shah Naim and Shaukat Malla alongside Al Basiti. These are the beloved viewers. 88 for the loss of 4. Can Madan be the man? Can he provide his side with the much needed breakthrough or a 2 here? जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, मदन को तो इसी कार्य के लिए हमेशा बुलाते हैं। कप्तान इस बार शॉट कवर पर टैप कर दिया है, हालांकि रन आउट होने का अवसर था लेकिन दूर रह गए शॉट कवर पर कप्तान नारशद, और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाया। हालांकि मदन हमेशा विकेट्स के लिए जाते हैं लेकिन आज कुछ रन खर्चीले जरूर साबित हुए, लेकिन फिर भी कप्तान ने विश्वास जताया है मदन पर। जानते हैं कि विकेट्स की दरकार है उनकी टीम को। इस बार अच्छी गेंद मदन की, और आखिरी समय पर अपने बल्ले को टैपर किया, नीचे लाने में कामयाब हुए बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को धकेला और रन एक ही मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 90 पारी के 10वें ओवर में। इस बार रक्षात्मक तरीके से फॉरवर्ड इन डिफेंस बल्लेबाज मुदस्सिर। मदन पीटरसन चाहेंगे एक आधा विकेट यहां से वो निकाल के दे अपनी टीम राइजिंग स्टार चिचलोरा को, तो कुछ रिलीफ उनकी टीम को जरूर मिलेगा। इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर के ग्लव से टकरा कर गेंद और फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी जज नहीं कर पाए। हालांकि कह सकते एक अवसर हो सकता था अगर फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी सतर्क रहते तो। Well, exactly. This has been the lapse of concentration time and again from the slipper, the fielder in the cordon. It's once again Amir Bingley there. Another one that should have been taken on that occasion. That one, and it finds the quick edge down towards the third man. Will get another single, and that's all he will get. Score moves to 90 for the loss of 4 over number 10 in progress. Shakir is watching. Hamad Wani, Parvez and Wasif Saeed and Raju Bhai and Shakir Ibn Ashraf. These are the beloved viewers of JK Sports Time. 91 for the loss of 4 wickets. They need still 60 more runs from remaining 60 balls. 10 done, 91 for the loss of 4. Look at the current run rate. They're scoring at the rate of 9 and they want to finish things as early as possible. But look at the Madan-led side. They have been able to bounce back in this very all-important grand finale. They still need 60 more runs of 60 ball. Run a ball from here on. When heartless boy, Shah Naim and Wasim Saeed is watching. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, an MHM multi-fashion branded store, Magam Agricolan, Mohammad Aslam Khan, Mir Ashik, Heartless Boy, Mohammad Rasim, Mir Ashik. These are the beloved viewers. Azam, 10 hours done. Halfway down, Zubair is another patient at view. 91 for the loss of 4. Next passenger play, 10 overs for 6 wickets in hand. They still need 60 runs. Whose game it is from here on? मनोहर भाई, जैसा कि हम कहते हैं इट्स एनीबॉडीज गेम, क्योंकि यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद हमने जैसा देखा था कि चिचलोरा की पारी भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन यहाँ पर अगर चिचलोरा किसी भी तरह इस मैच में वापसी करना चाहती है, रन रेट की बात करें तो रन रेट का कोई इशू नहीं रहेगा सिंहपोरा वॉरियर्स का जहाँ तक ताल्लुक है। यहाँ पर पानी का वक्फा चलता हुआ, लेकिन चिचलोरा के लिए महत्वपूर्ण जो बात रहती है वो सिर्फ विकेट्स रहती है। वो विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स में पिक करते जाएंगे तो इस मैच में बने रहेंगे, लेकिन जहां तक ताल्लुक है सिंहपोरा वॉरियर्स का, वो चेज के लिए बिल्कुल सेट है। अगर वो विकेट्स नहीं गंवाती है तो ये चेज बिल्कुल उनके लिए सेट है। उस फाइनल में अपना कब्जा जमाने के लिए उनकी जो रन रेट है बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि जब तक ना राइजिंग स्टार चिचलोरा कुछ करिश्मा करते हैं, यहाँ पर कुछ विकेट्स 2-4 वो लेने में सफल होते हैं, तब तक ये गेम जो है बिल्कुल सिंहपोरा वॉरियर्स के पाले में। Well, halfway down we get a kind of a breather here in the com box. Bright sunshine out here once again. Little dispersed cloud is put way away from the center. Well, Chichalura side, their spectators also join them at the center, at the middle, and the pep talk is going on, conversation is going on
and the high time to discuss how to get rid of this very partnership. They need wickets, as earlier on mentioned by my colleague here in the combox. Azam said that they need wickets, and the wickets column is important earlier on, even at this crucial juncture. Khande, John Lone, Salman Bhatt and others are watching. Thank you. It's 91 for the loss of 4 with 10 overs remaining, 10 overs to go, 60 balls to come and 60 needed by the batting side to win this match. Danishwani is watching. Don't go anywhere, don't fade away, dear beloved viewers. Asif Hamid and Mir Sarwar, Zaid Lone, Zaidu, Heartless Boy. These are the beloved viewers on JK Sports Time. 91 for the loss of 4. Over number 11 is in. We are going to be in over number 11. Till now 10 done, with 10 more overs to come. Rai Muzaffar, Sharif Kot, Farooq Ahmad and Khande Nadeem. These are the beloved viewers are watching. We have got the technical team here, Umar Bukhari, and I also got Jangir John here. And all the beloved viewers, thank you for joining us. Heartless Boy, Sheikh Adu and Singer Shanu Malik, thank you for your love. It's your love which puts kind of fuel to my tank to carry on umpire. But Adil writes in Mir Sarwar, Shuja John, well, all of the beloved viewers, they're also observing the game keenly, and better is to talk about today's match. You beloved viewers, write to us, what do you think from here on? Is it going to be Singpora's game from here on? And Rai Muzaffar writes in, thank you for your love. Is it going to be Chichilora's game to win from here on? And you can drop in your comments, simply you can say that. But I believe that if Singpora Warriors lose this match, it is going to be Chichilora can snatch the victory from the jaws of defeat, isn't it? And it's simply going to be that. And Rai Muzaffar joins us, Wani Asif and Amir Nazir. These are the beloved viewers. Well, this broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, manufacturers of UPC, UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion, branded store, Agrikalan Magam. Well, the match is about to resume here at the center. Mir Zohur, Shabir Ahmad, Adil, and all other beloved viewers. Well, Tajammul is proud and a pride scorer for today's match. Zadlon, Rai Muzaffar, and Sheikh Adu. And in the meantime, we'll have to wait and watch who's gonna start the 11th over of the match. We're going to be in the final passage of play, and it will decide the fate of the match. Who's going to be the champion of Big Bash T20 cricket tournament, Kunzer? Malik Irfan, thank you for your love. Batayan and all of the beloved viewers. Well, Azam, at the moment it's 91 for 4. Still a long way to go, but I can sense and smell from here on that the batting team, they have really chance to go over the line with ease if they manage to bat out of their skills and if they manage to play the ball on merit. जी हाँ मुनव्वर भाई, जैसे कि मैं बात कर रहा था, राइजिंग स्टार चिचलोरा इस गेम में तभी पकड़ बना सकती है जब वो विकेट्स लेंगे. विकेट्स 2-3 अगर वो लेती है तो ये मैच जो है बिल्कुल उनकी गिरफ्त में आता है. और 3 विकेट्स अगर हम देखें तो 3 विकेट्स खाली 3 गेंदें उनको ला सकती है. ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. हालांकि राइजिंग स्टार चिचलोरा के पास गेंदबाज ज़रूर है जो इस मुश्किल कार्य को आसान बना सकते हैं, और आमिर बिंगले उनमें से एक है जो गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए हैं. आमिर 11वें ओवर की शुरुआत करेंगे हाईवे एंड से. उनके सामने होंगे नए बल्लेबाज मुदस्सिर. इस बार जबरदस्त स्ट्रोक मुदस्सिर का, लेकिन उतना ही मायानाज फील्डिंग वहां पर कप्तान अरशद की. अरशद एक सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी है राइजिंग स्टार चिचलोरा के. हालांकि तेजी के साथ तीर जैसा ये स्ट्रोक जरूर निकला था, लेकिन सराहना करनी होगी यहां पर अरशद की. एक निश्चित बाउंड्री यहां पर बचाई अरशद ने. Well, exactly. That is a wonderful effort there at shore extra. What could have been a boundary? Limited the scoring down to single and worked away down to the backward skylag for more runs. Spraying down the leg, not learning the lesson as well once again. And freebies, and batsman says thank you very much. I'm going to pounce on to that one. And look at that little tickle, gentle tickle of the pads down to the fine leg boundary for 4. And that boundary propelled the total to 96 for 4 over number 11 in progress. Second ball coming up. Here goes Bingley once again. He has conceded 20 so far, picked up 2 wickets, across the line, and that raised above the waist side and below the rib cage, in between that area and around that abdominal cavity, and batsman wanted to clip that one down towards the onside. Doesn't get success. That hits him on the body, but he is fine. Batayan, Prince Wasim and others, thank you. It's 96 for 4 over number 11 in progress. Zaid Zaidu is watching. Amir Bingley conceded 20 and has picked up 2 wickets. And is he gonna pick up another one on this very delivery? Let's find it out. 96 for 4. Ijaz on strike, goes and goes to Ijaz. Oh, good looking shot down towards the backward of point. Stylish, copybook, proper calm stroke down to the backward of point.
will get a single. 97 it is for the loss of 4. Over number 11 in progress. जी हाँ मुनव्वर भाई और आमिर हालांकि एफर्ट तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको चाहिए कि विकेट्स के लिए अगर वो अपनी नॉर्मल गेंदबाजी करे डॉट गेंद्स पर भी जाएंगे। हालांकि ज़्यादा गेंदों और रन्स में अंतर तो है नहीं, अगर डॉट गेंदबाजी भी यहाँ पर कर सके तो वो भी काफ़ी लाभदायक होगा यहाँ पर राइजिंग स्टार चिचलोरा के लिए, क्योंकि जब वो डॉट गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर करेंगे तभी एक दबाव एक प्रेशर बन पाएगा बल्लेबाजों पर और उसी में वो विकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लेग स्टंप पर पैड लाइन पर गेंदबाजी करेंगे तो ये आसान रहेगा बल्लेबाज के लिए रन बनाना। आमिर इस ओवर में आखिरी मर्तबा 11वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर आमिर इस बार एजाज के लिए स्लोवर गेंद, इस बार प्रहार एजाज का, कवर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खराब गेंद इस बार आमिर की। ओवर की समाप्ति होगी यहाँ पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 102, 4 विकेट के नुकसान पर सिंहपोरा वॉरियर्स। Well, read it quite nicely. Saw that ball. Bowler shortening the length of the ball, stands tall and sends it through extra cover for 4. जी हाँ बिल्कुल मुनव्वर भाई, हालांकि पहले ही इस लेंथ को भांप लिया था यहाँ पर बल्लेबाज एजाज ने, बैकफुट पर चले गए और गेंद को ड्राइव कर दिया, कवर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एंड देन ब्रिक्स अप द 100 और इस तरीके से 100 का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर पार होता हुआ 102, 4 विकेट के नुकसान पर। Well, Azam, it is 102 for the loss of 4. We are in over number. We are going to be in over number 12. 11 done. At the completion of 11 as they have been able to put up 102. They still need 49 more runs to lift to the Big Bash T20 cricket tournament, Kunzer, for the first time. And it is the first edition of this very league. And in the meantime, here goes the pace across the umpire. Javedic ball down the leg side. No respite for the bowlers and no discipline whatsoever. No discipline. And away down the leg side. Sprays down the leg side. And batsman once again that gentle tickle down to the long leg boundary. 4 more runs. 106. They still need 49 more runs. And Arshad, the captain of the side, is unable to understand. So is the case with Madan. And both the guys are unable to understand who is to brought on with the ball. At the moment, it is Javed Iqbal who's offering those freebies and allowing the batters to break free. शुक्रिया वसीम वासु, इट्स फैसल, शुक्रिया नज़ीर अहमद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान ने इस बार एक मरतबा फिर गेंद को हल्के हाथों से ढकेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहां पर आदिल फाफ गेंद को फील्ड करेंगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और बार बार हमने देखा है कि राइजिंग स्टार चिचलोरा के गेंदबाज लेग स्टंप पर 1 या 2 गेंदें तो फेंकते ही जाते हैं और उन सभी गेंदों पर बाउंड्रीज हासिल की है सिंहपोरा वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। और लेग स्टंप पर जब आप पर कोई खिलाड़ी आपका डीप पर तैनात है नहीं तो उस समय अगर आप पैड लाइन पर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप रन्स के लिए जाएंगे। इस बार थाई पैड पे गेंद टकराई, अपील जरूर की थी लेकिन हल्की सी अपील, विश्वास बड़ी अपील थी नहीं है, गेंद वही लुढ़क गई, रन कोई नहीं मिलेगा। शौकत गनाई, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। लोन हिलाल हमारे साथ जुड़े हुए, शुक्रिया लोन हिलाल भाई। हंक यूनिस भी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके साथ साथ रियाज लोन भी हमारे साथ जुड़े हुए। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच जे के सपोर्ट्स टाइम को प्यार देने के लिए। आप अपना प्यार स्टार्स के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे इस लाइव नशरियात को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। लोन फिरदौस, सोफी, परवेज और रियाज लोन, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। इमरान एक मरतबा फिर एजाज के लिए, इस बार एजाज ने इस गेंद को कलाइयों के सहारे गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है। खिलाड़ी गेंद के पीछे तो जरूर है और रोकने में नाकामयाब, गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Well, that boundary brings up 111. Nelson on the board for the loss of 4. We are in over number 12. Once again on middle and leg. Drifts down the leg and nicely deflected away down to the backward square boundary. 4 more runs. It is 1-1-1 on the board for the loss of 4. 1-1-1. They still need 40 more runs to win this match. I think it's going to be formalities are remaining in this match from here on. But the cricket, the game of glorious uncertainties, can still change its colours from bad to worse, from worse to worsening. Let's wait and watch what kind of innings we are in for and what kind of a match we are in for, because things can really change and still match is yet to be completed. It is still 39 of 49 balls for Singpora Warriors to get them over, to get themselves over the line.
जी हाँ मनोहर भाई, अब ऐसा लग रहा है कि अब राइजिंग स्टार चिचलोरा के खिलाड़ियों के कंधे भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए, हालांकि अभी भी 39 रनों की दरकार है, अभी भी मैच में रोमांच आ सकता है। अगर 2 या 3 जल्दी विकेट यहाँ पर राइजिंग स्टार चिचलोरा की टीम हासिल कर पाती है तो निश्चित रूप से एक रोमांच जो इस मैच में अभी तो खोया हुआ नजर आ रहा है। इस बार अपील जरूर, अच्छी गेंद थी ये, पूरी तरीके से बल्लेबाज को छकाया। ओवर की समाप्ति होगी है, 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 112, 4 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार चिचलोरा के खिलाफ सिंहपोरा वॉरियर्स 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। Faizan Muzammil and Malik Buran, thank you E.R. Shafu and others, those who sent us the stars. Once again we are really indebted to your love. It's your love which encourages us and which encourages JK Sports Time to bring you the different kind of tactics to provide you the live broadcast. Thank you Shabir Ahmed and others for your love in sport, for your digital token of love, and sending our way Shatanveer send us the digital token of love. Thank you. And Vani Asif is also watching, and we definitely love to request all the blood viewers, keep sending in the digital stars time and again. It's a kind of a digital token of love for entire JK Sports Time. It is a family, you are the integral part of the family, and try to understand together we progress. Isn't Azam? And Sam Samir is also among the guys who have sent us the stars this afternoon. Thank you Sheikh Asif and others. 112 for 4, and keep sending in the digital token of love, digital stars. Malik Official, Sheikh Dilshad and others are voting. 112 for the loss of 4, 39 needed of 48 balls. This broadcast is brought to you by Aquafan Station, followed by Anthem Sports India Fashion Feast, Shining Star Papur, and MHM Multi Fashion Branded Store, Agricolan Magam. हाँ मनोहर भाई, गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान अर्शिद गेंदबाजी करने के लिए, फिरदौस मलिक ने पुल कर दिया है गेंद को। खिलाड़ी मौजूद तो जरूर है लेकिन वो दर्शक बने रहेंगे। गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। हिजाज के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता हुआ स्ट्रोक, अर्शिद अपने आप को बॉलिंग मोर्चे पे जरूर लगाया था अर्शिद ने, लेकिन पहली ही गेंद एक हाफ रैक डिलीवरी, हाफ ट्रैकर यहां पर बैकफुट पर चले गए एजाज और पुल कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। अब महज 33 रनों की दरकार होगी यहां पर, और एजाज भी अब तेजी में दिखाई दे रहे हैं। अर्शिद एजाज के लिए एक मर्तबा फिर, इस बार बैकअप बॉलिंग डिलीवरी यहां पर एजाज के लिए, शॉर्ट कवर पर गेंद को ढकेला, रन कोई नहीं मिलेगा। इमरान मौजूद वहां पर, शबीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बरादरी पे शुक्रिया। साहिल एजाज, शबीर अहमद, बिलाल अहमद मल्ला, शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्शिद कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार एजाज के लिए इस बार अच्छी गेंद, इस बार विकेट्स पे गेंद जरूर थी लेकिन हल्के कलाइयों के साथ गेंद को डिफ्लेक्ट पर कर दिया, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, अब स्ट्राइक पर होंगे मुदस्सिर। एजाज 20 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों पर, मुदस्सिर ने भी 10 रन बनाए 11 गेंदों पर, तो कुल मिलाकर अब 32 रनों की दरकार होगी यहां पर 45 गेंदों पर। अगर 2 या 3 विकेट्स यहां पर जल्दी से मिलती है राइजिंग स्टार चिचलोरा को तो इस मैच में खोया हुआ रोमांच वापस आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है यहां पर तो एक केक वॉक हो जाएगा यहां पर सिंहपोरा वॉरियर्स के लिए। यहां पर अगर गेंद हाथ में आती शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के तो एक खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 120, 4 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पर। 31 needed of 44 balls. Vani Asif, Sophie Parvez and Ejaz Para. Thank you all the beloved viewers. 151 is the target, and this time the ball didn't raise up to what he explained and not what he intended, but the ball kept a bit low, but he still manages to keep that one down and out to where it is the mid-off area, and he goes across for a single. 121 for the loss of 4. 30 needed of 43 balls. That means 7 over and a delivery is remaining in their quota, and that's a good ball. Once again that side arm action, and that's a kind of a slanga action, bringing the ball in with that side angle is quite difficult for the batsman to understand that it isn't even visible in the side screen, and it's coming look at that very side arm action I threw it out earlier, and sideways it is quite difficult to understand whether this one is going. And Tanveer Ahmed, thank you for your love for sending us the stars on JK Sports Time. Well, Azam, 121 for the loss of 4. Shafiq Sofi, thank you for your love. And Azam, they need still 30 runs from 42 balls. Is there any twist or a twirl in this very match? What do you think?
मनोहर भाई, क्या यहाँ पर कुछ रोमांच अभी भी मैच में बचा है? क्या बाकी है कुछ रोमांच यहाँ पर? ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। 30 रन बनाने हैं 42 गेंदों पर। अगर विकेट्स नहीं ले पाती है राइजिंग स्टार चिचलोरा की टीम तो ये आसान हो जाएगा सिंहपुरा वॉरियर्स के लिए। और अब मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि रियाज अहमद को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया है और काफी सीनियर खिलाड़ी है रियाज अहमद चिचलोरा की जानिब से। अर्शद और रियाज काफी वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं चिचलोरा के। क्या रियाज का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा? इसी के लिए यहाँ पर बुलाया है यहाँ पर कप्तान अर्शद ने रियाज को। क्या रियाज यहाँ पर 1 या 2 विकेट्स यहाँ पर निकाल पाते हैं राइजिंग स्टार चिचलोरा के लिए और एक मौका, एक रोमांच यहाँ पर मैच में ला सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं बहरहाल 30 रनों की दरकार 42 गेंदों पर। और आज बिग बैश T20 कुंजर के इस मंच पर आदिल काचरू, एक बड़ा नाम, वादी के चहीते सुपरस्टार बल्लेबाज आज यहाँ पर मौजूद है। चीफ गेस्ट के तौर पर आदिल काचरू आज यहाँ पर खेमे में आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हम आपको आदिल काचरू जो कि हमारे चीफ गेस्ट है आज के इस बिग बैश T20 फाइनल के, वो आपको देखने को मिलेंगे। रियाज गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर और पारी के ये 14वां ओवर जारी। रियाज कमेंट्री बॉक्स छोर से इस बार एजाज के लिए, इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद हल्के कल्लाइयों के सहारे गेंद को धकेल दिया। शॉट मिड विकेट की जानिब, वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते हैं आसानी के साथ 1 रन यहां पर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। और स्कोर जो है वो 122, 4 विकेट के नुकसान पर। अब महज 29 रनों की दरकार 40 गेंदों पर। अगर विकेट्स यहां पर मुनव्वर भाई नहीं मिलते चिचलोरा को तो ये मैच काफी जल्दी खत्म होता हुआ। Well, exactly. This can really end up on a winning note for the batting side, and with a no time. But that was short one once again, half-parted shot for caught behind, and umpire straight away shakes his head in disapproval and says that there is a big daylight between the bat and the ball. There is a big gap and a kind of a vacuum on that occasion available to the naked eye. 122 for 4. Over number 14 in progress. Next ball coming up goes away from us and bows. That's a good looking shot, but straight to cover point. A single taken in the end. That single takes the score to 123-28 needed of 38 balls to win this match. Well, we got the guest of honor Adil Kachu. He has been invited as a guest of honor for today's grand finale here at Kunzer, and he is in the guest panel area. Adil Kachu, Riaz Khande, and Hank Yunus and Riaz Khande. 123 on the board. Once again, oh, chance of a run out, chance of a, oh, it's gone! Again it's the run of play, wicket number 5, and he has sold his partner down the river, and there goes wicket number 5. Hope of the team is back into the dugout. Tanveer Hussain, Khurshid Ahmed and Riaz Khande. Again as the run of play, there was no need. And it's a kind of a suicidal run. And is there any twist in the tile? And is this going to be intriguing like that of a detective novel and like that of a masala film? And is this carrying those kind of instants in this very chase? In remaining 28 balls from remaining in remaining 28 runs from the remaining 38 balls, Khurshid Ahmed and Bilal Ahmed Mullah and all other blooders, thank you for joining us on JK Sports Time this afternoon. Velaka Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Feast, Shining Star Pampur, NMHM Multi-Fashion Branded Store, Agri Clan Magam. These are the proud sponsors behind this lovely coverage. And Bilal Ahmed Mullah, Jangir Wani, Rahel, Lon Adil, Ghazi Bhatt. These are the regular viewers of JK Sports Time, and whenever we go live, they tend to come this way, they tend to hop tabs this way. And well, thank you all the beloved viewers. This is a final match of Big Bash T20 Cricket Tournament Kunzer, coming your way live and exclusively. Rising Star Chichalura facing Singpora Warriors, and both the teams are fighting it out, sweating it out, and both the teams would definitely love to lift to the title. I'm including Irikaman and Eon Prince, Ghazi Bhatt and Shafi Malik. These are the beloved viewers, these are the passionate viewers, and these are the
premium viewers of JK Sports Time. Khande Tarek, Riyaz Khande and Saldar. Walaikum salam to all the beloved. Ayan Butt, Manir Shad. These are the another beautiful viewers. This is a bunch and a crew of the viewers. Mir Zahur Ghazi Butt, 123. Bukur Imran. Walaikum salam brother. In the air, down to the back with a point. Oh, it goes down to the boundary. It is a boundary. Out of nowhere, he has been able to fetch a boundary way outside the up, some length and offer, and now the target is reduced to 24 from 36 balls and a bad delivery. Bukur Imran, Sophie Parvez, Ahmed Dar and Asif Ahmed. Thank you all the beloved viewers for sending us the love, respect, and keep loving this very live broadcast. Score is 127 for 5. 20 score needed of remaining 36 balls. Mir Zuhur, Lon Bilal, and Sam to you brother Lon Bilal. Ghazi Butt, well, a short pause in the game. Sharik Malik and Malik Zuhur, the conversation going on, and it is the high time to get into a hurdle and make a decision who is to give in the ball and how to put things under control and how to dent to the confidence of the opponent side. Singer Shanu Malik, thank you brother. It is Imu Khan Irfan. Walaikum salam to all the beloved viewers of JK Sports Time, and Asif Ahmed and Malik Nusrat and Khan Irfan. These are the beloved viewers. Sam to you all the beloved viewers on JK Sports Time. Well, Nasir Ahmed, thank you. Mira Ashok and Mir Irfan. Score is 127 for the last of 5. But in the middle, Ejaz is unbeaten and 29 of 16 balls. And Zubair, Huzair Butt, Tarek, Saldar and others. Well, Ejaz Khan is batting on 29 of 16 balls. Shahid is going to bowl and Butt is on strike. He is yet to open his account. He is none of none. And for the first time he will face the bowler Shahid, who has conceded 16 runs. It is Shahid mentioned here on the big screen. It is Imo, great. Thank you brother Sophie Farvez, Ghazi Butt and others. Pressure begins. The very first ball, shot one outside the off stump, beaten all end this up. Tanveer Yatu, Salim Bashir and Mizur. Walaikum salam to all the beloved viewers. 127. Sam to you brother. Love from, thank you brother, thank you KD Lover. 127. Second ball up to 15th, goes and bows and steals that one down to the third man. Boundary. And that is another beautiful shot, Umar. Look at that one. That evade is the fielder there at gully. And the third man, both the fielders ended up being as mute spectators. They were watching the ball where it is going. It has eluded them down to the boundary. Abdul Qayyum, Rai Rail and Khan Arif and Sal Tarek. Thank you all the beloveds. 4 more runs added to the tally. 131, 20 needed of 34 balls. Thank you, Batal Top, for your love. Sophie Parvez, next one outside there. No ball it is. It is another blessing in disguise for the batting side. It is a kind of agony for the bowler there. And this side, they have to compound their agonies. Look at that one. Malik Nusrat, Sophie Parvez, Saldar. Thank you for tuning into the live broadcast. Ashwash Graitsin, score is 130 when displayed on your screen, brother. And so is the case with Rizvi, 127 for 5. And that's another good shot, but straight to the throat of the captain. Hold us on to the catch, but it is a no ball. It is a free, so no harm done. And he survives that very scared. Danish Ghazi Butt and Danish Wani, 132 for 5. 90 needed of remaining 35 balls. Strapping bit leg side and plays it into the onside. And there is captain there at Ciliar cover position. No run there. 132 for 5. Over number 15 in progress. Sam to you brother. Walaikum salam. But Saklan. 132 for 5. 14.3 done. Halfway down into the 15th over. Oh, beautifully bowled. Lord better line coming into the batsman, and the batsman manages to keep that one down and out towards the Ciliar cover. Captain is there, Said Zuhur Shah. Thank you. It is 132 for 5. 19 needed of 33 remaining balls. The two umpires of the match, Uyub and Tausif. Tausif is the strike umpire. Next ball goes and bows off the outside edge, and once again it carries to the third man boundary. What can bowler do? What can bowler do? Zuhur Shah and Manzoor Shah, Dardanish, and thank you all the beloved viewers on JK Sports Time, and walaikum salam to all the beloved viewers. Look at that one once again. Bowler manages to find an edge, but the ball takes the quick edge of the blade and goes through like a traceable down to the third man and up the slope down to the boundary. 4 more runs. 137 it is for the loss of 5. 14 needed.
Only formalities remaining in this match, and Madan is unable to understand. Arshad is unable to understand. Danish, thank you, brother. And Khande Asif and Mir Hamid, these are the blood weavers. Mir Server, Sam to you, brother. Walaikum salam. Muzammil, another change in the bowling department. Saeed Ziyafat Rizvi, Ghazi Bhatt, Firdaus Kashmiri. These are the blood weavers. These are the premium weavers. These are the respectable weavers. Malik Zulfi and Ghazi Bhatt, 137 for 5. Malik Irfan, we are in over number 16. The very first ball played across the line, back to the bowler. No run there. Wani Manzoor, Mansoor Mughal, Sophie Pervez. 137 for 5. Goes and bows in the air, and he holds us on. Oh, he puts down a dolly. He puts down a dolly. And look at the lapse of concentration. Are they going to come back for the second? And the non-striker has pushed for the second and made it with ease. Now they need 12 more runs to win this match. And look at that backward a point fielder who put down a dolly and roars and echoes going around the park. And this is not the way you can win the match. And finally, their shoulders are dropping down. And oh, that is another good looking shot of the backward down to the short backward a point. Another run fetched. Tausif Wani, official Johnny, Mir Zahur and others. Score moves to 139 for the loss of 5. 12 needed. 2 big hits will seal the deal. Will take Singpora Warriors over the line, and they will lift to the title for the first time. Altaf, thank you for your love. Wani Manzoor, Sam to you. This has been swing away and down towards the mid-on area for more runs. Fielder gives up the chase. Let's go through down to the boundary, and he's going to save his legs. 140 comes up. 144 comes up for the loss of 5. 7 needed. A 6 will do it for the batting side. A 6 will do it. And Mir Ashik, Wani Manzoor and others. Thank you, Hinurani and others. Umar Kader and Zinatul Islam. 144, 7 needed. And that one, he bent down and the ball flies over his blade. Wicketkeeper does rest in style. 144 for 5. This is JK Sports Time presenting you the live broadcast. And that's a good shot, driven it down towards the extra cover. Fielder puts in the dive, but to no avail. And a fielder from mid-off comes across, does the field at wide-ish extra cover area. A single taken. 145, 6 needed. Altaf is watching. Tahir Amin and Firdaus Kashmiri are also watching on JK Sports Time. This broadcast is brought to you by Aqua Fenestration, followed by Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Papur, and MHA Multi-Fashion Branded Store, Shabir Khan, Wani Asif and Wani Manzoor, and that should have been taken. That dolly of a catch there, a backward a point, put down by the fielder. Sagar Latif and Javed Iqbal dropped to that catch. Khan Irfan, Sagar Latif and Wani Manzoor. Javed Iqbal will be bowling. Crowd on their toes. So is our commentary box. Everyone is pumped up with over number 17 in progress. Here goes ball 1. And it doesn't do for the bowling and batting side. That is a dot ball. Now they need 6 of 23 balls. Will this be the over they were eyeing for? They will be looking for Khurshid Ahmed, Walaikum Salam, Adil Bhatt and Saldar. Mahi Majid, MKJB and others watching. Sam to you, brother. I'm fine. I'm sweating it out here in under the scorching heat. Sophie Pervez, 145 for 5. 6 needed. 1 big hit will do it for Singpora Warriors. And this time digs it out down towards the long on area. Will get a single, and that's all he will have to contend with. Chichlura bowling totally failed. Agree with your statement. Advance Eid Mubarak to whole team of JK Sports Time from Prandus Communication Kunzer. Thank you, Bin Manzoor and Lone Ejaz, and advance Eid greetings to entire globe and entire Muslim fraternity. JK Sports Time, Adil Bhatt. JK Sports Time is thankful to you, Adil Bhatt and others. Kohli by the next one. Oh, that's a good delivery, and that one hits him on the body on that occasion, and ball ricocheting down to the backward. Skellig, another run fetched. 147 for the loss of 5. Butt is on strike and Ejaz goes off strike. He's on 37 of 21 balls. What an innings. An enterprising and calm, stylish copybook for those Kashmiri. Irfan but Wani Manzoor, and he has really been exceptional with the bat. Ejaz Khan, since the fall of his colleague Firdaus Malik. Mohammad Salim, thank you brother. Kohli bhai and Mahi Majid, thank you for your love.
And once again, stepping mid leg side, played back to the bowler. Bowler lets it go through down towards the long on. Another run fetched. 148, 3 needed. A boundary will exactly do it. A 6 will mean they have scored more runs than their opponents in pursuit of those 151. It's Rai Manzoor and Sophie Parvez, Wani Manzoor, and all other beloved viewers. Mushtaq Lone, these are the beloved and proud viewers of JK Sports Time. Mushtaq Lone and Ahmad Tarek. 148 for 5. 17th over in progress. Here goes the bowler, and he swing and a miss. Well, this has been the story of too many guys today. Swing and a miss, and it hasn't been the story you miss I hit, well, Umar, but that flies almost up to the chest side, but way away from the batsman, and that is a dot ball. Now they need 3 runs from remaining 19 balls, 3 overs and a ball to go. Mushtaq Lone, Rai Rail and Adil Dar. Walaikum salam, brother. 3 needed to win this match and to win the grand finale. Goes and bows. Oh, good delivery once again up to the chest height, and he just manages to put that one down onto the pitch, so no harm done. Adil Wani, Shah Shaukat and Rahil is watching. Thank you, Mushtaq Lone, for your love. Well, this broadcast is brought to you by Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Brand Store. Lone Ejaz is the regular viewer of JK Sports Time. Shah Shaukat and Adil Bhatt, all the beloved viewers, thank you for your love and sport. 148 for 5. Way down the leg side. Is this going to run down to the boundary? No, doesn't. Wicketkeeper holds on to the ball. Now, 17 balls to go. 3 needed. 3 needed to win, 2 to tie, 3 to win the title. Here goes Arshid for the second time. Sophie Parvez, it's Rishi Manzoor watching from that distant place of Lolab. 148 for 5. Second ball goes and goes, and he wanted to dig that one out once again, but off the inner edge it ricochets down to the backward square. Mir Ashik, Nazir Ahmed, and it is someone, Nazir Ahmed, Mir Ashik and Malik Irfan. Sophie Parvez, thank you all the beloved viewers. The next ball coming up now. 2 needed to win this match from remaining 16 balls. Arshid goes away from us and bows. Stand stall, played with a soft hand eye coordination perfect, head still on to that one, and driven but straight of filler, and a silent Rumi, Loon Bilal, Ahmed Mushtaq. 2 needed. Here goes Arshid and bows. He comes charging down the track and he finishes off in style. Huge hit, and there you see the crowd is thronging into the centre, and finally it was Ejaz who took them over the line, who took his side over the line with a gigantic hit, boisterous one, and that was hit with tremendous power over the line and over the mid-on boundary. 6 more and that's it. It is Singpora Warriors, or the champions of Big Bash T20 cricket tournament, Kunzer, first edition. And that's it we have for you from this very area, and you can see they're rejoicing, they're celebrating every bit of it, and they deserve it, and to lift the title. And there you see these guys are going to lift the title for the first time, and myself, Munawar Tanveer, alongside my colleague, will take you back to the studios of JK Sports Time with this message and news. Advance Eid greetings to entire Muslim fraternity of the globe, and we shall be back next time with the next zest and zeal, with the next encounter that might be from, and we shall be back with the presentation for today's match, but we will be back next time with a new enthusiasm and zest and zeal. Until then, take good care of your Assalamu alaikum and join us back for the presentation.